अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये है आपकी 5th की इंग्लिश की बुक जिसमें आज हम इसमें यूनिट नंबर 10 कराटे पैरेट आज हम इसकी फुल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी तो बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है हाउ डू वी नो दैट द थ्री फ्रेंड्स ऑफन मेट एट द कैफे। इसकी मीनिंग है कि हमें कैसे पता चलता है कि तीनों फ्रेंड्स अक्सर कैफे में मिलते थे। बेटा आंसर है इसका वी नो दे ऑफन मेट एट द कैफे थ्रू द स्टेटमेंट लाइक नंबर 1, यानी दो स्टेटमेंट से हमें लगता है कि ये तीनों फ्रेंड आपस में हर वक्त आपस में कैफे में मिला करते थे। नंबर 1 स्टेटमेंट है आदिल एंड बाबर वर सिटिंग इन देयर यूजुअल सीट बाय द विंडो। एंड सेकंड है समीर सेज स्पेशली व्हेन आई एम हियर मोस्ट ऑफ द टाइम विद यू टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शोड एन इंटरेस्ट इन समीर्स फुट। किसने दिलचस्पी जाहिर की समीर के फुट की तरफ। आंसर है इसका बाबर एंड द वेटर शोड द इंटरेस्ट इन समीर्स फुट। दो बंदों ने इंटरेस्ट शो किया था उसके फुट की। वो कौन थे? बाबर और वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीजन सारा वांटेड टू कीप अ पेट। क्या वजह थी कि सारा अपने पास पेट रखना चाह रही थी? उसकी मेन वजह क्या थी? आंसर है इसका सारा वांटेड अ पेट टू कीप हर कंपनी बिकॉज शी वॉज लॉनली। वो अकेला फील करती थी, इस वजह से उसने महसूस किया कि उसके पास एक पेट का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सारा गो टू परचेज अ पेट। सारा पेट खरीदने कहाँ गई? सारा वेंट अ पेट शॉप keep on the corner of GT Road and Flower Street beside the milk depot to purchase a pet। ये पता दिया गया है कि वो कहाँ गई थी पेट खरीदने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द असिस्टेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट द पैरेट्स स्किल। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है मुजाहिरा करना। का मतलब है कि पैरेट स्किल का कैसे असिस्टेंट ने मुजाहिरा करवाया। The assistants demonstrate the parrot's skill by placing an old chair in the middle of the shop, letting the parrot out of its cage, and saying in a loud voice, "Parrot, karate chair." Next question है how did Sarah test the parrot's ability? Sarah tested the parrot's ability by allowing the parrot to practice its skill on her old boxes, crockery, and the other useless item. Next question है how did the parrot come to attack Sameer? Parrot ने कैसे समीर पर हमला किया? When Sameer returned home, he asked his wife about the parrot. When he heard it was a karate parrot, he expressed his disbelief by saying, "Parrot, karate, my foot." The parrot immediately attacked his foot. जब समीर घर वापस आया और अपनी वाइफ से पैरेट के बारे में पूछा और उसने जब ये सुना कि कराटे पैरेट, तो उसने जब अपना इजहार किया और कहा कि कराटे का पैरेट है, तो उसने कहा माई फुट के साथ ही पैरेट ने उस पर फौरन उसके फुट पे हमला किया। हाउ डिड समीर फाइंड अ वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन अ पीसफुल मैनर? आंसर है इसका एवरी टाइम पैरेट केम हेयर to Sameer, he says karate loudly and parrot flew right away. That's how Sameer found a way to avoid conflict. Next question है explain the following in your own words, यानी अपने अल्फाज में आप इनके इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करें। नंबर ए है I was staggered। आपने लिखना है I was amazed। नेक्स्ट है proudly declared, to announce publicly. Karate parrot, a parrot that can do karate. Too incredible, most amazing. Lost for words, speechless. Service counter, desk.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। नंबर ए पार्ट है आई फाउंड आउट लेटर दैट शी एंडेड अप इन द स्ट्रेंज लिटिल पैट शॉप। नंबर 1 पार्ट है इसका हु मेड दिस स्टेटमेंट एंड टू whom। बेटा तो आंसर है समीर मेड दिस स्टेटमेंट टू आदिल एंड बाबर। Number 2, in the story being told by the speaker, what had she been doing earlier? He, yani Sameer, had been into city, had visited the bank and done some shopping. Number 3 है, why did she go to a pet shop? Sarah went to the pet shop to get a pet because she was lonely at home. B part है इसका बच्चों he stood there looking very pleased with himself. Number 1 who was standing looking pleased with himself. आंसर है इसका the parrot. नेक्स्ट है वाई वॉज ही लुकिंग सो प्लीज्ड। आंसर में लिखे ही हैड जस्ट स्मश्ड अ चेयर टू पीस। लास्ट है व्हाट रिएक्शन डिड अदर पीपल हैव टू द इवेंट दैट हैड जस्ट टेकन प्लेस। सारा इज एस्टोनिश्ड एंड प्लीज्ड शी बाइज द पैरेट। Next question है write the opposites of these words often, seldom, noisy, quiet, enemy, friend, narrow, wide, remember, forget, float, sing, loose, tight, many, few, busy, free, tough, easy, last, first, dead, alive। ये ऑपोजिट वर्ड बेशक आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हमने इनके मीनिंग्स भी फाइंड करने हैं और इनके सेंटेंस भी बनाने हैं। फ्रेग्रेंस pleasant or sweet smelling, devoted, strongly attachment, loyal, customary, usual, practice, colossal, huge, deafening, very noisy, affectionate, loving। बेटा इनके सेंटेंस भी बनाने हैं तो सेंटेंस की तरह चलते हैं। फ्रेग्रेंस का बना लें she collected the fragrance bloom, devoted soldiers are devoted for their homeland, customary she give the customary speech of thanks the principal, deafening the noise of the machine was very deafening, affectionate I have a affectionate family, colossal they were asking a colossal amount of money for the house। ये सेक्शन सी में सारे एडजेक्टिव्स के मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं विद एग्जांपल। ये यूज द राइट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव्स इन ब्रैकेट। इन ब्रैकेट में हमने ये अभी सॉल्व करेंगे। अली इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन आवर क्लास, दिस बुक इज मोर बोरिंग देन द लास्ट वन, माई हाउस is bigger than yours। Number D है this is the dash book I have ever read, most interesting। तो बेटा कराटे पैरेट की फुल एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो अगर आपके काम की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।